नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे हमने पिछले दिन कहा था वैसे ही पढ़ाई करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जानते हैं और छोटा सा एक आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पहले लिख देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आता है? हमको गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में हमको पता था कि डेल डॉट टी इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस रो में क्या क्या आता है? देखिए इस रो में क्या क्या आता है, दिखाई दे रहा है? एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब ये देखते हैं ये जो डेल डॉट इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इस रो में आता क्या क्या है। जब भी हम एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ये इंसुलेटिंग बॉडी होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक पाया जाता है और डाइलेक्ट्रिक का अंदर होती है बाउंड चार्जेस। तो ये जो रो होता है ना, ये टोटल चार्ज होता है जिसके अंदर हम फ्री चार्ज की बात करेंगे, जिसके अंदर हम बाउंड चार्ज बात करेंगे। ये पिछले दिन बताया था। और सिमिलरली सरफेस में भी होता है सिग्मा, जिसके अंदर सिग्मा बाउंड चार्ज होता है और सिग्मा फ्री चार्ज होता है। बहुत बढ़िया, ओके। अब पिछले दिन हमने पढ़ा था कि जो सिग्मा बी होता है वो क्या होता है, वो होता है पी वेक्टर डॉट होता है एन कैप। और जो रो बी होता है उसके बारे में पढ़ा था माइनस ऑफ डेल डॉट पोलराइजेशन वेक्टर, ये पढ़ा था। तो ये डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू पी वेक्टर। और रो को क्या लिखेंगे, रो मतलब फ्री चार्ज प्लस रो ऑफ बाउंड चार्ज। अब लिखेंगे डेल डॉट into epsilon naught into electric field vector equal to rho free charge into rho bound charge मतलब माइनस ऑफ डेल डॉट into p वेक्टर और डेल डॉट epsilon naught into p वेक्टर प्लस डेल डॉट p वेक्टर। ये रो एफ के बराबर हो जाएगा। और जब हम डेल डॉट कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर आती है epsilon naught e वेक्टर प्लस p वेक्टर और वो इक्वल टू रो एफ के बराबर आ जाएगा। तो जहां से एक चीज बात करेंगे, डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू रो एफ। तो हमारे लिए डी वेक्टर बराबर क्या आ गया, हमारे लिए ये जो डी वेक्टर है ये क्या आ गया, डी वेक्टर आ गया एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इस डी वेक्टर का जो बाउंड्री कंडीशन उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम और एक चीज देख लेते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, उससे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। और लीनियर डाइलेक्ट्रिक मतलब जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है और जहां पर एक कांस्टेंट आएगा उसको बोला जाता है एप्सिलॉन एक्सी इंटू ई वेक्टर। और ये जो एक्सी है ना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और जहां पे ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और इस पी वेक्टर का वैल्यू को अगर जहां पर हमने पुट कर दिया तो अगले पेज में देखते हैं, अगले पेज में डी वेक्टर इक्वल टू वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। और एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के साथ अगर पी वेक्टर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एक्सी इंटू इलेक्ट्रिक वेक्टर कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ, आई एम सॉरी, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो एप्सिलॉन नॉट और एक्सी मतलब इसको एक्स एप्सिलॉन आर लिखा जाता है। मतलब ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो डी वेक्टर इक्वल टू दिस एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एक इक्वेशन आ गया।
और हमको पहले से पता था पी वेक्टर इक्वल टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक में एप्सिलॉन नॉट एक सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, और एक चीज, जहां अगर हम डेल डॉट डी की बात करेंगे, डेल डॉट डी वो हमारे लिए रो एफ आ गया, तो इससे हम एक चीज लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जैसे गॉस लॉ में क्या था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे वहां पर भी इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू फ्री चार्ज, और ये हमारे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, जहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस में क्यू एफ की बात करेंगे। तो जैसे बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे, अगर बाउंड्री कंडीशन फॉर डी वेक्टर, तो बाउंड्री कंडीशन ऑफ डी वेक्टर की बात करेंगे, तो सिमिलरली डी परपेंडिकुलर माइनस ऑफ डी परपेंडिकुलर प्राइम इक्वल टू हो जाता है सिग्मा इंटू एफ, सिग्मा इंटू एफ, और सिग्मा एफ इज द फ्री चार्ज ऑफ द सरफेस। पहले हमने इसके बारे में बात कर लिया कि सिग्मा को अगर दो चार्ज में तोड़ेंगे तो बाउंड प्लस फ्री, और डी वेक्टर में बस फ्री चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ई डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता था, ई परपेंडिकुलर माइनस ई परपेंडिकुलर प्राइम इक्वल टू sigma by epsilon naught. Now is this sigma is total sigma, that is free charge plus bound charge, but in case of d vector we only talk about the free charge, not the bound charges. So this is d perpendicular minus d perpendicular prime equal to sigma f, this is bound charge. Now this is del dot ds, del dot d equal to rho f, but del cross d vector, what is del cross d, equal to epsilon naught of del cross E vector in electrostatic condition plus del cross into P vector. Now del cross E equal to 0, so it is del cross of P vector. In electrostatic condition del cross is 0. But if we talk about D parallel, so D parallel minus D parallel prime equal to P parallel minus of P parallel prime. So this is not used at all. This is second condition and this is first condition. The second condition is not as much as popular as first condition. So this is the first condition. Now when we solve a problem, what the boundary conditions of electric field and the displacement vector we will use? Let us see. Now if this is a boundary, okay, if this is a boundary and this is the permittivity of electrostatic field epsilon 1 and this is epsilon not relative, okay, this is actually not relative, this is actually epsilon naught into epsilon r for first medium, okay, and this is the electric field. What is the electric field? This is the electric field, this is the first electric field and this is the second electric field, okay. The electric field direction is this and second electric field is direction is this, and this is known as E2 vector and this is known as E1 vector, okay. So what is the perpendicular? The perpendicular is this, okay, perpendicular is this and this angle is theta 1 and this angle is theta 2. So what is the parallel component? So what is the E parallel? So E parallel equal to, we know the first condition, that is E parallel equal to E parallel prime. So E parallel is the first medium, okay, the outward medium. This is actually z greater than 0 if this is z axis and this is z less than 0. So this is what is prime factor. Prime factor is z less than 0 and there is no prime, so this is z greater than 0. The first boundary condition is this, we will apply first. So what is the parallel? This is xy plane, okay, this medium is an xy plane and there is no surface charge. So this is, there is no surface charge means sigma f equal to 0 and there is no condition of the bound charge because there is no free charge, so there is no bound charges. So E parallel equal to E parallel prime. So E parallel equal to, what is the E parallel? E2 sin theta 2. E2 sin theta 2 for this medium, and for the second medium E1 cos theta 1, E1 sin theta 1. So this is first condition. Second condition is D perpendicular. Now D perpendicular prime equal to sigma f and there is no sigma f, that is 0.
So we can write that is d perpendicular equal to d perpendicular. Now we will tell about what is about e perpendicular. Why will not use e perpendicular? E perpendicular हमने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि e perpendicular इसलिए यूज किया क्योंकि वहां पर जो चार्जेस की बात होगा ना, वहां पर हमको बाउंड चार्जेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब हम ई परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ई परपेंडिकुलर माइनस ई परपेंडिकुलर प्राइम, वहां पर आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस सिग्मा इंक्लूड्स बोथ चार्ज, वन इज फ्री चार्ज, वन इज बाउंड चार्ज। इफ सिग्मा इफ इज जीरो तो सिग्मा बाउंड चार्ज वी डोंट नो अबाउट इट, तो बाउंड चार्ज के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए हम बस सिग्मा एफ मतलब वहां पर डी वेक्टर की बात करते हैं। और जब पैरेलल कंपोनेंट में डी वेक्टर में फिर से पी वेक्टर आ जाती है, ये भी बाउंड चार्ज से लिंक्ड है, तो बाउंड चार्ज से जब लिंक्ड बात आएगी तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, इसीलिए दोनों कंडीशन यूज करते हैं, एक ये और दूसरा ये। किसी भी प्रॉब्लम में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज दिस, सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज दिस। So what is d perpendicular? D perpendicular equal to epsilon naught e2 cos theta 2 and epsilon 1 e1 cos theta 1, correct? So this is condition number A, this is condition number B. Now divide us. So divide, the condition is tan theta 2 by epsilon 2 equal to tan of theta 1 upon epsilon 1, correct? Tan of theta 1 upon epsilon 1. This is the actual formula, and from these two formula we can actually easily evaluate E2 and E1. जहां से हमको E2 और E1 की वैल्यू मिल जाएगा, तो A, B and this condition is C. So by dividing A and B, so using ABC you can write any field, E1, E2, E3, okay? So what is the E1? E1 is nothing but square root of E1 square cos square theta 1 plus E1 square sin square theta 1. Very easy. And what is E2? E2 is just like of E2 square cos square theta 2 plus E2 square into sin square theta 2. Okay, now E2 cos theta 2 is this. E2 cos theta 2 equal to epsilon 1 upon epsilon 2 E1 cos theta 1, and E2 sin theta 2 equal to epsilon 1 sin theta 1. So we can easily write of E2 as the function of E1 and theta 1. Okay, एक्चुअली एक फील्ड दिया रहेगा, दूसरा फील्ड निकालना है, तो E1 दे रखा है तो E2 निकालना है, तो E2 को एज अ फंक्शन ऑफ E1 तो मैंने एक्सप्रेस कर ही दिया, जहां पर E2 cos theta equal to epsilon 1 upon epsilon 2 E1 cos theta 1 and E2 equal to E1 sin theta 1, E2 sin theta equal to E1 sin theta 1. So the value is square root of E2 cos theta 2 is this epsilon 1 upon epsilon 2 whole square into E1 square cos square theta 1 plus E1 square sin square theta 1. So E1 into square root of epsilon 2 epsilon 1 by epsilon 2 का whole square into cos square theta 1 plus sin square theta 1, correct? This is E2 as a function of E1 and theta 1. E1 and theta 1 is given, you have to find E2. So this is a very easy problem, we will solve that. Now there is a one much problem we have to solve, और एक problem है जिसको solve करना. Suppose this is a dielectric, okay, and these are two plates. These two plates are charged, this is plus plus, and this is minus 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 minus, or plus, and there is a bound charge of negative, and there is a bound charge of positive. So what is the P vector? What is the P vector? P vector is this, negative to positive, because this is the direction of the dipole moment. So P vector is the direction of this. Okay. So what is the bound charge? This is minus P and this is plus P, because we know that is a sigma B equal to P vector dot n cap. So what is the direction of the n cap here? This is n cap. And what is the direction of n cap? This is n cap. Now this is P and this is n. They are opposite, so this is negative, and they are in the same direction, that is plus. Everything is easy. So there is a point at this is A. So what is the D vector at A?
So d vector equal to, we know that is epsilon naught, and this is plus sigma, and this is minus sigma. Okay, and this is minus p. So epsilon naught into electric field plus p vector. So what is d vector? Epsilon naught of what is 8a? Epsilon naught into electric field vector. So electric field vector due to plus charge, sigma by 2 epsilon naught downward, negative charge p by 2 epsilon naught upward, plus p by 2 epsilon naught, also this is upward for this plus charge, and for this negative charge sigma by 2 epsilon naught negative charge, and plus p in the downward direction. So what is d vector? uh, Sorry, this is epsilon naught into sigma by epsilon naught downward, and p by epsilon naught upward, plus p into downward. So this is sigma into downward plus p into upward plus p into downward. So these are cancelled. This is sigma, and this sigma is the free charge. Okay, this is actually sigma f, and this is in the downward direction. So this is for the free charge. This sigma is the free charge. Okay, this a point, there is no influence of the dielectric. So this is sigma f. And similarly, suppose there is a point. Suppose there is a point B. At B, d vector equal to sigma f downward direction, and at there is a point of C. Similarly, d vector equal to sigma f. So everyone can see that at A, at B, and C, irrespective the point is inside the dielectric or outside the dielectric, the d vector is always equal. That is depend on the free charges. There is no influence of the dielectric. This minus p plus p, there is no influence. They are just cancelled out, because in this point this negative charges will push up. The electric field upward में होगा p by 2 epsilon naught, and is positive charge p by 2 upward, and p vector is downward. Okay. So d vector has no influence of the dielectric. There is only depends on the free charges. That is the main point of using d vector. D vector has no influence of the bound charges. We don't have to deal with the free charges. We have to deal only with the free charges, not the bound charges. तो बाउंड चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करना पड़ता. तो डी वेक्टर का असली इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो बाउंड चार्ज है, इस बाउंड चार्ज का कोई डिपेंडेंस नहीं रहता, बस फ्री चार्ज का डिपेंडेंस रहता है. तो ये डी वेक्टर का सबसे अच्छी बात है. डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन डी प्लस पी, इसीलिए हम लिखते हैं कि जहां पर बस फ्री चार्ज की बात हो रही, क्योंकि बाउंड चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाउंड चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाउंड चार्ज का क्या चार्ज डेंसिटी है, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में हमको सब कुछ मालूम नहीं होगा. पर जो फ्री चार्ज है, जो बाहर से हम दे रहे हैं, फ्री चार्ज हमेशा बाहर से हम दे रहे हैं, उसके बारे में हमको सब कुछ पता होगा. तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना ज्यादा इजी है. इसीलिए डी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इंट्रोड्यूस किया. तो हमेशा डी वेक्टर यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आगे क्लास में हम देखेंगे डी वेक्टर यूज करके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम कैसे निकालते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगर कोई डाउट हुआ तो पर्सनल टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा उसमें मेरे को कॉन्टेक्ट करना. ठीक है. तो आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ाया. अगले क्लास में इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर इन द फर्स्ट टाइम. थैंक यू एवरीवन.